Hello, beta. In today's class, we are going to go ahead and we are going to talk about the contributions of Gadgil. ठीक है? Gadgil का, Professor D.R. Gadgil, his contribution has been one of the most important uh, contribution इन द प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, जब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी, 1991 की पॉलिसी से पहले की बात है, तो उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट बेटा. सो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ प्रोफेसर डी आर गाडगिल. इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ डी आर गाडगिल. अकॉर्डिंग टू डी आर गाडगिल, अगर हमें किसी भी कंट्री को, स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं इस केस में, ट्रांजिशन करना है, तो ट्रांजिशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस कंट्री में जीडीपी इनहैंसिंग सेक्टर है, उसको हम कमर्शियलाइज करें, उस पे हम फोकस करें. राइट. सो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डी आर गाडगिल, one thing which was an important event in economic transition of country, it was the decline of handicraft. उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब हम इंडिया की बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, देखो, वेदर इट इज प्रोफेसर वकील और गाडगिल और वी के आर वी राव, all of these beta, their contribution is just after independence. मतलब जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, मतलब आई हैव टोल्ड यू राइट दैट we can have before independence period, in between independence and liberalization period, and after liberalization period. तो इनके जो भी इन लोगों ने whatever they have suggested, it is here somewhere here 1947 के बाद से इनका इकोनॉमिक सजेशंस शुरू हुए थे. Right. And when we talk about their economic suggestions, so you have to understand that they will always compare India with what was before 1947. Ki, what are the reasons why India has lost its, GDP, has lost its money. ठीक है, ब्रिटिशर्स में ऐसा क्या क्या हुआ कि इंडिया को अपना जो भी इंडिया का पैसा था वो लूज आउट हो गया. एंड देन दे विल गो अहेड एंड देन दे विल टॉक अबाउट हाउ दैट कैन बी नाउ इम्प्रूव्ड, कि कैसे हम उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा हुई. Are you understanding it? So basically, whenever we talk about these people, you will see that we are always comparing things with the British era. हमेशा पहले हम ये देखेंगे कि अच्छा ठीक है, what happened during the British era, and then we will go ahead and we will do that comparison. ठीक है, इसीलिए whenever we talk about even D.R. Gadgil, we are first going ahead and we are first talking about what happened during the period of Britishers. That is where he will go ahead and he will talk about his economic planning कि अच्छा ठीक है, अब ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो गया है, how can we go ahead and how can we improve it? Is this making some sense? Okay, so please start writing. Dear Gadgil, also known as Dhananjay Ramchandra Gadgil, was prominent Indian economist, policy maker, and institution builder.
His contributions spanned several areas, including economic planning. Economic planning means, beta, 5-year plans, rural development, cooperative movements, and institutional economics. ठीक है, and institutional economics. ये बात समझ में आई? So now we are going ahead and we are saying that his contribution has been it has been multifold. बहुत directions में हमने देखा है. Now, as I said that because when we talk about economic planning means 5-year plans. So बेटा economic planning में जब भी इन्होंने कुछ भी plan किया है, it has been in accordance with what happened before independence. तो पहले economic planning से भी पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके economic ideas क्या थे जब ये country के लिए कुछ भी suggest कर रहे थे, कोई भी planning कर रहे थे. So before that, what were his economic ideas, right? So first economic idea, beta, according to D.R. Gadgil, the most important event in the economic transition of the country was decline in handicrafts on the account of railway policy, free trade policy, and lack of technical education in India. Abhi, let me explain this point. अब क्या देखा गया? What was seen? देखो, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर बेटा, है ना? बट इट वॉज सीन दैट व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड इन इंग्लैंड, जब बाहर इंग्लैंड में द प्रोडक्शन ऑफ मास क्लोथ्स स्टार्टेड, right? So we saw that there was decline of the agriculture of the handicraft sector. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाई इज इट दैट देयर वाज अ डिक्लाइन, व्हाई इज इट दैट द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग? The reason behind the decline of the handicraft sector was that ना ही सिर्फ बाहर ये चीप क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ रेलवेज these clothes could easily be transported throughout India. हम easily इनको पूरी इंडिया में हम स्प्रेड कर पा रहे थे चीप क्लोथ्स को. हाउ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेलवे. ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, दोज क्लोथ्स विच वर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया वर इजिली इंपोर्टेड इन इंडिया. कुछ उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रही थी, तो उसको इजीली हम इंपोर्ट भी कर रहे थे. एंड लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, and people didn't know how to go ahead and how to commercialize their handicraft sector. उनके पास वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी नहीं थी. सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली वेंट अहेड एंड दे इट स्टार्टेड द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर. ये पहला चीज हुआ. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हिम, द कमर्शियलाइजेशन of agriculture and
increasing population were responsible for starting industries in India. अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज होना शुरू हो गया. इट मीन्स वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. ठीक है, वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स. तो जब हम फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, द सप्लाई ऑफ फूड क्रॉप्स वाज लिमिटेड, द डिमांड ऑफ फूड क्रॉप्स वाज मोर. इट लेड टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन ऑफ द फूड क्रॉप्स इन इंडिया. ठीक है, above, over and above this, the population in India was increasing. तो ये जो population थी, this was also getting unemployed. So because of increasing population and commercialization of the agricultural sector, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई जहां पे ये लेबर फोर्स को हम ट्रांसफर करना शुरू हो गए. राइट, सो इट स्टार्टेड द सो इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया. राइट, राइट नाउ ड्यूरिंग early part of the British rule, cotton textile and jute industry made commendable progress. Right? Regarding future trend, he observed no big industries requiring complicated machinery of a thorough use of byproducts are likely to spring up. मैं एक बारी समझा देती हूँ. What does this mean? So what he said is that देखो, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस तरीके की हम यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की, तो क्लियर था दैट दिस कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट वाज बीइंग यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, इन एंड इट वाज हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड. इससे इंडिया को कोई हेल्प नहीं हो रहा था. It was just being used as a raw material in India. इस raw material को we were going ahead and we were selling it outside. We were exporting it. So he noted that, you know, the way that this is going, जिस तरीके का trend चल रहा है, he noted that basically this is never going to lead to a use of big industry in India. India में कोई बड़ी industry नहीं आएगी. Right? Where complicated machineries will come and everything. No, it was very clear that we can see that this is clearly a place where India will be always seen as supplier of the raw material. This is what he noted during the British eras. Right? So this is what was his thought process during British era. Okay. Now, please write down. Professor Gadgil ideas about industrial labor can be understood in his publication of Regulation
of wage and other problems of industrial labor in India, in which topics related to wages, employment, standard of living, of workers, industrial relation, effects of rationalization of India are covered. So basically what we have seen is that, see, Gadgil ke according, he saw that there was a lot of issue in the labor sector, right? And in the industrial labor sector. And he talked about many things during the British era. Things like regulation of wages, कि कैसे wages को regulate करना चाहिए, similar wages देनी चाहिए. Things like how wages are there in India, how employment is there, कैसा standard of living है workers का, how they're overexploited, how is their industrial relation. So he talked about all of these things in his publication. And what was the name of the publication? Publication का नाम था Regulation of Wage and Other Problems of Industrial Labor in India. ठीक है? So this is what was there. And now, he basically identified two major problems in the wage rate system. So we can just write down here. He identified two major problems in wage rate system. Right? First of all, low level of wages of industrial workers, and the second problem was disparity of wages for similar work. So what he identified is, first thing he identified is low level of wages. Ki wages ही कम थी industrial workers की. And secondly, he identified that for people who were working same work, right, who were doing the same work, they were getting different wages. उनको अलग-अलग पैसा मिल रहा था. So he thought that if we want to improve the condition of the worker, we should be going ahead and we should be regulating wages at a higher level, right? We should be regulating wages overall. Okay? So he went ahead and he believed that regulating wages is one thing that needs to be addressed. And उसी के बारे में हमने यहाँ बात की ना, regulation of wages and other problems of industrial labor. Okay? And he also thought that we want to go ahead and we want to improve the working condition of the worker. जिस कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं उस कंडीशन को भी हमें इंप्रूव करना है और उनकी वेजेस को हमें रेगुलेट करना है, राइट? ही थॉट दैट इफ वी वुड डू दिस, अगर हम ये दो चीजें कर लेते हैं, इट विल गो अहेड एंड इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स का जो एफिशिएंसी है वो उससे इंप्रूव हो सकता है, राइट? He also went ahead and he also proposed several other welfare programs.
उन्होंने बहुत अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम भी दिए लेबर्स के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि उनको घर बना के दो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इंश्योरेंस दो। इमेजिन एट दैट टाइम ही इज सजेस्टिंग ऑल दिस, इट्स स्टिल नॉट फॉलोड इन इंडिया, राइट? सो प्लीज राइट डाउन, he recognized that to increase efficiency of labor, there should be regulation of wages and better working conditions. He also proposed. So, as I said, he proposed several welfare programs. Several welfare programs like industrial housing, unemployment insurance, holiday with pay, sickness insurance, to improve working situation of or workers situation. Simple. तो क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमें कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। व्हाट कैन बी दीज वेलफेयर प्रोग्राम? वो वेलफेयर प्रोग्राम हो सकता है कि हम उनको घर बना के दें, हम उनको अगर वो अनएम्प्लॉयड है उस टाइम पे कुछ मिनिमम पैसा दें, हम उनको ऐसी छुट्टियां ऑफर करें जिसमें पैसा मिलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कॉर्पोरेट्स में आपको पूरे साल की 22 लीव्स मिलती हैं, पेड लीव्स। हम उनको सिकनेस इंश्योरेंस दें कि अगर वो बीमार पड़े तो उनको पैसा दें। सो इफ वी प्रोवाइड ऑल दिस देन इट विल improve the working situation of the workers, and when working situation will be improved, so automatically efficiency of the labor will be improved. इससे labor की जो efficiency है that would automatically be increased. Is this clear बेटा? ठीक है। Now let us go ahead